Hello, everyone. Hello. Hi everyone, a very good afternoon. Just give me a thumbs up if I'm audible and visible clearly. Thank you. This is how we are going to communicate in the upcoming time. As all of you know that 90% of the show is going to be virtual. So I hope we all can see each other. So it's a request that whoever has not switched on their videos, please keep your videos on. There is, okay. So there are very basic features जिसके बारे में हम आज पहले बात करेंगे. Whenever we are joining a meeting, make sure आप अपने device name या किसी numeric name से आप join नहीं करें. आप अपनी settings में जाके नाम change करेंगे, जैसे कि सिमरदीप कौर है, अंजलि है, हर्षिका है. So you all have to check कि आपकी जो settings है वहाँ पे Galaxy F12, Samsung S7 and iPhone नहीं लिखा हुआ हो. Thank you so much, ladies. And this is your first introductory session with Forever Star India. I congratulate you first for completing your audition round very successfully. So, who all are excited for the training sessions? Give me a thumbs up. Thank you so much, ladies. It's, I see a lot of stunning and beautiful faces across the screen. I want all of you to smile, because you all are going live on Forever Star India's app and the YouTube as well. So you have to make sure you're not just hearing out the things, but you are there with, with your happiness and excitement for the project. So let's start talking about the last season of Forever Star India. As you all know that we made a world record of crowning 300 winners. So ये जो 300 winners थे, इनमें से आज 2 winners हमारे साथ में हैं, जो कि आज आपके trainer और mentor की तरीके से काम कर रहे हैं. They will be guiding you. They will be sharing their journey with you, so that you can have the same inspiration with and definitely the motivation from the team. So I hope I'm making sense to everybody. Just give me a thumbs up. Thank you. Yes, that's the kind of, whenever a jury is saying something and you agree to it, you have to give them a thumbs up. Okay. Queries will be taken in the end of the session. So don't worry. आप अपने queries note down करके रखिए. There is nothing you have to be worried about. So after this training session, there is going to be one more training session and 3 talent rounds. ये 3 talent round क्या है? Let me just give you a brief idea so that you all can be prepared for the upcoming time. ये 3 talent round है जिसमें ramp walk majorly आपकी judge की जाएगी. So you have to be very much sure आपकी जो ramp walk training होने वाली है उससे पहले आप heels में comfortable हो. Because the trainers will not guide you कि आपको heel में चलना कैसे. They will show you the posture and the poses. You all have to be taking care of that you are very much comfortable with the heels. Heels means stilettos only, 3 to 5 inches, and you really have to be comfortable. अगर किसी के पास stilettos नहीं है, you have to buy it and then start practicing. अब आप daily basis पे जहाँ पे भी जा रहे हैं, start wearing heels, because in the upcoming time you all are going to be the celebrities of Forever Star India. So it's a request, and definitely it's your dream eventually that you have to be there in those good, beautiful couture gowns and the makeup and the crown. So to all of you, and to start with the sessions, I just let me invite the jury, and then we'll talk about the talent rounds again. So we have Preeti Lavanya, who is going to be the host today, and definitely she is going to be the guiding light for you in the upcoming time. We have Jasmine Rayat, who was the brand ambassador from Punjab and winner from last year. She has 2 crowns. We have Namrata Nath, who was the national brand ambassador, and Namrata has 3 crowns, and they were at different levels. So हम जहाँ 300 विनर की बात कर रहे हैं, ये 300 विनर वही है जो हम सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल पे क्राउन किए गए हैं. इस साल 750 विनर्स की क्राउनिंग होगी. सो आपको जो अब टैलेंट राउंड के बारे में ध्यान रखना है. टैलेंट राउंड 1 is your ramp walk, your very crisp introduction. आपको डिटेल में नहीं जाना है. Very crisp कॉपीज तो बिल्कुल भी नहीं बताना है. Please make sure, because I have seen in many talent rounds, वो आप ऑडिशन में ऑलरेडी बता चुके हैं. And ramp walk, and you have to tell your idol कि आपका आइडल कौन है.
and it should be very relevant. अब जो भी आप अपना title बता रहे हैं, it should be very relevant, and you have to make sure that you have same personality and you have the reasons also that why you have chosen that title. So ये आपको communicate करना है in just 1 minute. So make sure you prepare really well. कि अगर आपने 1 मिनट में उसे नहीं prepare किया तो आपकी negative marking होगी. So practice is the key for that. Then talking about second talent round, there is ramp walk. रैम्प वॉक के साथ साथ में इस टैलेंट राउंड में आपको अपने आइडल को Interrupting. Please repeat the first point. Okay, Nandita. Okay, that's for everyone. Every point will be repeated and PDF will be shared. Do not unmute and fluctuate the screen because it is in a speaker view. And yes, to repeat the first talent round, there is ramp walk, there is an introduction, and you have to talk about your idol and why you have chosen that idol. So अब आप पहले रैम्प वॉक करते हैं, पहले आप कम्युनिकेट करते हैं. इट इज टोटली ऑन योर क्रिएटिविटी. यू विल नॉट बी आस्किंग एनीबॉडी. आप अपने तरीके से प्रिपेयर कीजिए. एंड इन सेकंड टैलेंट राउंड रैम्प वॉक के साथ में अब आप उस आइडल को डिपिक्ट कर रहे हैं इन सम फॉर्म ऑफ एक्टिंग, डांसिंग और वट एवर यू वॉन्ट टू डू. जैसा भी आपको सही लगता है आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो आइडल को डिपिक्ट करते हैं. Is in third talent round, it is all about that glamorous showstopper who is walking that ramp. So it will be judged on your final ramp walk, and definitely your makeup, your hair, and all that beautiful look. So you have to grow from your talent round 1, 2 to 3 in your ramp walk because that will be majorly judged. So are we all clear with that? Thank you so much, ladies. And let's hand over the mic to Preeti to invite the juries. Thank you so much, everyone. It was lovely meeting you. I'll be still observing all of you on the screen. Preeti, over to you. So thank you, Jaya ma'am. And first of all, a very good afternoon to all of you. And now, सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो आज हम ट्रेनिंग राउंड कर रहे हैं, द इंट्रोडक्शन राउंड. इसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपके ट्रेनर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट. तो आपके ट्रेनिंग राउंड्स हैं, द प्रोसेस किस तरह होती है. जैसे सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपका ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद आप पार्टिसिपेशन में गए, पार्टिसिपेशन के बाद अब आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ये है. इसके बाद एक और ट्रेनिंग सेशन होगा. इसके बाद 3 टैलेंट राउंड होंगे जो कि आपको जया मैम ने अभी इंट्रोड्यूस किए हैं अच्छी तरह. वो आप सबने उनको नोटेड किया हो क्योंकि आपको ये ट्रेनिंग सेशन बहुत सीरियसली लेने. अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग ही आपको जज किया जाएगा, राइट. आप कितना अच्छे से सीरियसली ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, इन्हें कितने अच्छे से नोट करते हैं, कितना अच्छे से अज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पर ही आप अपने टैलेंट राउंड में अच्छा कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आज जो वर्चुअल प्रेजेंस पे आपकी बात करेंगे क्योंकि 90% हम अगर ट्रेनिंग सेशन हो गया, आपके टैलेंट राउंड हो गए, हमारी सिटी क्राउनिंग लेवल हो गई, उसकी हमारी क्राउनिंग प्रोसेस होगी, वो भी वर्चुअली होगी. तो 90% जो हमारा प्रोसीजर है वो पूरा अप टू ऑनलाइन रहेगा. एंड ऑनलाइन में क्या इंपॉर्टेंट करता है, क्या चीज बहुत मैटर करती है, वो है आपकी वर्चुअल प्रेजेंस. कि आप किस तरह कैमरे को फेस करते हो, किस तरह आप वर्चुअली प्रेजेंटेबल कितना हो, कितना आप में कॉन्फिडेंस है, राइट. उस सब के बारे में we have like 2 beautiful trainers who will guide you and train you. First, I would like to have Namrata to unmute herself and give you some idea about how to use a virtual presence. So, Namrata. Thank you for inviting me on the board, and also welcome all the lovely, beautiful ladies. I hope you all are just doing great. Give me a thumbs up if I'm audible and visible to every one of you. Brilliant. So how are you all doing? All doing great? All really pumped up, excited for the first training round? Okay, so today I'll be talking about your virtual presence. Okay, so first of all, tell me, do any one of you have an idea of what a virtual presence is? Please raise your hand virtually. किसी को कोई भी idea है what virtual presence is all about? You can raise your hand. Okay, a lot of you have ideas. Okay, let's start with Redmi Note 9 Pro. I need your name. Please unmute yourself.
Redmi Note 9 Pro, am I audible? Please unmute yourself. Yeah, ma'am. Virtually means it's online. First, tell me your name. Who are you? Myself, Roshni Pandey. Virtually means something. It is in online form. Okay, so like it was really mentioned before that you all have to change your name from your mobile, whatever phone you're using or electronic gadget you're using, change your name to your name first. Okay. Secondly, let's talk about the virtual presence. Like you said, virtual presence is all about how you represent yourself on the screen. Okay, let me point out like Arunima Srivastava. For example, Arunima, Simardeep Kaur, Shivani Sharma, even the iPhone, the one in blue dress, the blue top. So, I really liked how you all are looking on the screen, right? So it's totally because आप लोगों को या तो idea है और you all have given your auditions and you know कि आप खुद को जैसे दिखाते हो स्क्रीन में आप दुनिया के साथ वैसे ही कनेक्ट कर पाते हो. So if I sit like this, do you see my face? No, right? Now if I put the camera like this, do you see me? Half of my body is like out of the camera. If I sit like very laid back or something like this, does it looks good and professional? No, right? So this is the way of sitting right in front of the camera. Jahan pe there is 2 inches of gap above your head. Okay, इससे क्या होता है? You give a very professional and presentable outlook in front of the camera. Now, when you're talking in front of the camera, make sure that you're looking straight into the camera. Why? Because we are not sitting face to face. हम लोग literally physically presently सामने नहीं बैठे हुए हैं. So in order to connect with the audience, in order to connect with your jury, try to maintain the eye contact with the camera. इससे क्या होगा? At the same time, you're able to contact each and every single one. You're able to visualize, you're able to maintain the eye contact with every one of you. Okay? इसके अलावा when you're sitting in the center of the screen, make sure कि आपका head ना cut हो जाए, आपका जो surrounding है वो blur हो. Like for example, mine. If you are the candidate, if you're the participant, you have to make sure कि jury का और audience का attention आप पे टिके, not behind your background, like not behind what's going on. If you're sitting like, if I talk about one of you, let me point out, for example, Nilima. Nilima Moore is, I think you're logged in with your mobile phone, right? Nilima, आपने अपने मोबाइल से लॉगिन किया है, right? Just give me a thumbs up. Yeah. So अब आपने फोन को एक जगह स्टेशन नहीं रखा हुआ है. You are like moving and shaking your phone. इससे क्या होता है कि आपके पीछे जो भी there's a lot of disturbance in the background. So मेरी attention आप पे नहीं जाएगी. I will see who is walking by behind you. I will see आप फोन को हिला रहे हो. इससे क्या होता है कि attention distraction होती है आपके jury members की. So make sure that you keep your phone or your laptop that you are logged into एक stationary जगह पे एक टेबल के ऊपर रख सकते हो or on a window or on a shelf to make sure कि it's not shaking all the time like this, right? How does it look if I shake it? Totally unprofessional. So आप एक national level beauty pageant में हो. These are the basics about the virtual training which you have to keep in your mind. Okay. Also, I would like to point out Vandana Jangra. आपने अपने phone या laptop से login किया हुआ है and you have kept the mobile phone or the laptop like 2 below. So I can see something like this. ऐसी view आ रही है. Now we don't want to see you like this. We want to see you like this. ना वो चेंज करते हैं ना. Sorry? Samsung. Yeah, I would request every one of you to be on mute. And if you have any queries, we'll take all your queries at the end. Okay? Great. So, like I mentioned, कि virtual presence एक बहुत important point है. So you all have to keep all the points I've mentioned. इसके अलावा आप जब भी अपने कोई भी training sessions को attend करने आ रहे हो, make sure that you have minimum little bit of makeup on your face because you have to look very, very presentable. We are getting connected with this electronic gadget and you are representing yourself in this national platform. So you have to look like that. You have to look like a Miss India participant, right? You cannot come in a casual dress with, face without any makeup or without any accessories to, accentuate your look. So you have to be bit, presentable. So how to do that?
Every one of you can use a bit of CC cream, right? If not foundation, you can use some, chunky earrings to brighten up your look. Okay, you can tie up your hair or keep your hair open. But if you're trying to follow the look, jahan pe aapka hair open ho, make sure that your hair is not covering your 50% of the face. Like I can see Nilakshini, right? It's Nilakshini. जिसने अपने बाल को, you have kept your hair open, but half of your ear and everything is getting covered. Even Samsung SM, you have also kept your hair open. So keep it in a way where you're looking presentable, but not your face is getting covered. Okay, I hope it's very clear. Just give me a thumbs up. Wonderful. So our participants are really very fast in adopting, huh? Great. The last thing that I would like to mention is your body language. Body language plays, psychologists say that the body language plays a very major role in transferring the energy. आपके body से एक energy निकलती है. That energy has to be very, very positive when you're interacting with your juries or, interacting amongst yourself. So make sure that जब आप कभी भी interaction करो किसी के साथ virtually, आप अपने hands को use करो. Why? You have to use your hands because there is no other way apart from moving your jaws and talking. So it shouldn't look like I'm talking to a dummy, right? But stationary बैठ के नहीं रहना. You choose some light movements. You can use your hands. These are called hand gestures. So इससे क्या होगा? You will be able to connect more. Like I'm using my hands, right? If I would just talk, just sit stationary, how would it look? Like very boring, dull. So you have to use your little bit of hand gestures. इससे क्या होती है? Connectivity अच्छी होती है. Clear? All clear? So I hope you all will be using all these points. Also, last but not the least, please take a note of everything that I'm going to tell you or any other jury members are going to tell you. इससे क्या होगा? If you do not make a note of it, that is going to affect your performance. Because like we always say, there is a silence, silent jury जो आपको observe करेगी हमेशा. Okay, and they will mark down on each and every one of you how your performance is going to happen. So make sure you take the notes of everything. We all are going to train you and follow it. Okay, let's talk about the light. If I sit in a very dark background, will it give me a very positive look? Will it give a very bright and shiny look? No, right? So you should always make sure कि आप light को face कर रहे हो and not against the light. Okay, if you're sitting against the light, your face will come dark. जैसे कि let's talk about Arunima Srivastava. Like I really like your presence, the virtual presence on the screen because I think you're facing the light and आपके पीछे में थोड़ा बहुत background distraction है, but I think you can work on it. So we can see your face really well. Also, let's talk about Sonia Chautela, right? So even your light आपके face के तरफ आ रही है. So that's a good thing because we are able to see your face. So all those जिन्होंने एक dark background पे बैठा हुआ है, there is a light issue. Make sure that you are presentable and you're visible because we want to see your face. We want to see how you smile. Again, coming to the point, smile. Why smile? Because when you're nervous, smile is going to be your deadly weapon. आप nervous हो, लेकिन आप smile कर दो, आपके smile से पता नहीं चलेगा आप कितने nervous हो, right? So always smile, don't get nervous. Even if you're nervous, keep smiling. सामने वाले को नहीं पता चलेगा आप कितने nervous हो. Let's talk about this scenario जब आप सबको घर पे सबके parents डांटते हैं, डांट पड़ती है, तो आप बाहर जाके दिखाते हो कि you're upset and sad? No, right? How do you hide it? With a smile, isn't it? So always keep smiling. That is how you'll be able to connect positively with your juries, with your audience. And that is it from my side. Ramp walk करते समय, make sure that your screen visibility is 100%. Because if you're doing your ramp walk, आप सबने audition दिया है. So it's very clear that we want to see how you walk, right? Ramp walk trainers will tell you the tricks and the tips. But let's talk about your visual, how you see yourself in the screen. आप कैसे खुद को दिखाते हो. So जब आप ramp walk करते हो and you guys are coming close to the camera, half of your body is getting cut.
So how will the jury members see your facial expressions, your reactions, the way you walk? So make sure जब आप रैंप वॉक कर रहे हो, आप अपने फोन को इतने डिस्टेंट पे रखो कि आपका कोई भी बॉडी पोर्शन कट ना हो जाए. Okay? So I think the virtual presence is very, very clear to all of you. किसी को भी कोई doubt है? You can raise your hand. Nandita, I think you have a question. I have only one question. Like, is there any possibility like we can start training offline if anybody wants to come to do offline training? So is it possible in Bangalore or nearby location? Namrita, let me take this. Hi, Nandita. So as you know that the show will be virtual till the city. When you're coming offline, there is going to be an offline training too. So the process is very step by step. You have to be aiming firstly for the city winners list. So let's keep it virtual till then. Okay. Thank you. Can't hear you. You are on mute. Yeah, I'm sorry. And one more thing, like, can it be happen in weekends? Like usually, like today is weekdays, so I'm taking 1 hour leave from my office, and then I'm doing this. No, I understand that, but the thing is, with the availability of trainers and groomers, and we have not just one batch, there are a lot of batches. Okay. So it is divided accordingly, and hardly you come in one session every week. So it won't be a big deal, I think. Okay. Thank you so much. It will be in weekends also. Like there can be possibility that these sessions can be available. It is. You have to get in touch with the number who have sent you the link. Okay. Sure. Thank you. Thank you. If anybody has a question related to virtual presence, they can raise their hand and Namrata will be answering. Thank you. Galaxy F12 has a question related to my virtual presence topic. Yes, ma'am. Like apart from the hands gestures, what else we have to do? I have already mentioned all the points that you have to take care whenever you're coming for the virtual presence, right? आप एक meeting में बैठ रहे हो. You cannot afford to, look very casual, so you can work on your look. You can, accessorize by getting some nice jewelries, like some earrings or anything like that, some nice neck piece. Okay. So something that will accentuate your look. You can use your fingers, your face, obviously, because you're going to talk. Abhi ramp walk to abhi karna hai nahi. It's the training sessions. So you have to sit and just use your fingers a bit, not too much. Aise nahi karna hai, but just a bit to look presentable. That's it. Okay. Okay, now I'll request all of you to be on mute. Jiska bhi no questions are sorted. Great. So just I hope you all enjoyed my training session with this virtual presence, and thank you so much for being here, and all the best. Hope to see you all in the with the gorgeous crown on the hair and that beautiful kocha gowns on the stage. And then over to you, Preeti. Thank you so much. Thank you, Namrata. And I hope each and every participant noted down properly and take these training sessions seriously. Okay. Before coming on to Jasmine, I would like to point out two things. First, I have to see smile on each and every participant. Right? Yeah. And second thing is like I have seen some names like Galaxy F12, iPhone, and Dendy. ये सारे जैसे नम्रता ने भी आपको बताया, जया मैम ने भी आपको बताया कि हमारे कुछ हिडन जूरीज हैं जो नोट करते हैं. अगर वो आपको यहाँ से जज करते हैं, कुछ भी मार्क्स देते हैं, तो वो आपको किस बेसिस पे देंगे? आपका नाम ही नहीं पता उन्हें. गैलेक्सी F1, आईफोन, मेक श्योर या आप अभी चेंज करें या नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ट्रेनिंग सेशन या टैलेंट राउंड में आए तो अपना नाम प्रॉपरली आपका नोटेड होना चाहिए. राइट? सो ऑल ओवर टू यू, जास्मीन. Thank you, Preeti. Thank you, Namrata. Hello, everyone. This is Jasmine Rath. I'm so happy to look so beautiful faces over here. So I'm your trainer, mentor, as well as your consultant regarding psychology. I am here to motivate you, boost your confidence, as well as to see all those weaknesses that are
actually hindrance in your success journey. So starting with my introduction here, behind, I was just a participant just like you, and sitting over there thinking the same patterns and all those opportunities. And then I won Miss Punjab brand ambassador from FCA and Miss Kapurthala, and now I am seeking the same pattern from you also. Let me look out that who will be the winner. And no matter what, how your journey is going, what are the threats you are facing, etc., etc., we have to overcome, like the psychology. And please let me know if somebody is only Hindi language oriented. I'll repeat the specific pattern in the another language also, right? So starting with, we would be dealing with the 4 things. First of all, that what are your strengths, ऐसी चीजें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं, आपका हुनर, और आपकी वीकनेस, यानी कि आपके जो चीजें आपको लगता है मेरे में इन चीजों की कमी है, और थ्रेट्स यानी कि जिन चीजों का आपको डर होता है, और अपॉर्चुनिटीज तो आप सभी जानते हैं जिसके लिए हम ऑलवेज वी आर रेडी टू ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी, एंड एफसीआई इज द राइट वन. सबसे पहले तो आज आपको यही अपॉर्चुनिटी मिली है. अगर आप थोड़े अपने स्पेसिफिक मंथ्स के पीछे जाएं तो कितने लोगों ने आपको आके ऐसा बोला कि प्लीज स्माइल, कितने लोगों ने दिल से बोला? बहुत कम लोगों ने बोला होगा. तो एफसीआई एक ऐसी जर्नी है जो आपको दोबारा से स्माइल करना सिखाएगी. विमेन, फीमेल, आप औरत, गर्ल, जो भी आप नाम देते हैं, लेकिन एवरीबडी हैज सम रोल्स. नो डाउट मेल्स भी निभाते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी 24 आवर्स 365 डेज हमेशा चलती है. सो एफसीआई एक ऐसी जर्नी है जहां पे आप अपने आप को दोबारा से पाएंगे, रीजनरेशन. रिगार्डिंग दैट, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेटर ऑन, मीडिया अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे आप हमेशा ये सोचेंगे कि ओके ठीक है, मुझे मॉडलिंग में जाना है, मुझे एक्टिंग में जाना है, या फिर मुझे फोटोग्राफी के लिए मॉडलिंग करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके लिए आपको बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती हैं जो आपको एफसीआई मदद करता है, यानी कि प्रोफेशनल फोटोशूट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि प्रोडक्ट एंडोर्समेंट, एज वेल एज सोशल मीडिया रेफरेंस एंड गूगल रैंकिंग. गूगल पे अगर आप अपना नाम लिखेंगे, आज आप सभी लिख के देखें आप क्या पाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी नाम अगर यूनिक नहीं है तो बहुत लोगों से मैच करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज जैस्मिन हूँ तो बहुत सारी जैस्मिन होंगी जो वहां पे आ जाएंगी, लेकिन जैस्मिन रियाद वो स्पेसिफिकली आपको एफसीआई मदद करेगा. जहाँ पे आप गूगल पे अपना नाम टाइप करेंगे, अगर आपका सक्सेस जर्नी बहुत अच्छा रहता है तो आपका बहुत टॉप मोस्ट में आ जाएगा. तो ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगी. अभी पर्सनली बात कर लेते हैं. स्वॉट एनालिसिस के बारे में आज बात करेंगे, जो एक्चुअली साइकोलॉजी की एक टेक्निक है जिससे हम स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन राउंड है, तो इसमें आपको अपने आप को ढूंढना है कि मैं क्या हूँ. सबके पास पेन एंड पेपर होंगे, राइट? एवरीबॉडी इज हैविंग? गिव मी थम्स अप. ग्रेट स्टूडेंट्स, राइट? ओके, सो अभी आपको लिखने हैं इस पे सबसे पहले अपना एक स्ट्रेंथ, एक वीकनेस, एक थ्रेट और एक अपॉर्चुनिटी. I'm giving you just 1 minute. उसके बाद I'll pick someone randomly and I'll ask from yours. Done? Everybody's done? Give me thumbs up. Okay. May I ask Shivani Sharma? Shivani, can we have you on the screen? Hello, ma'am. Hi, Shivani. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Very good afternoon. Yes, let me know what is your answer. What is your strength? Okay, my strength is when I have to do one thing. I'm very multi-talented. Okay. Like I can focus on many things at a one period of time. And Okay. my weakness is to trust and be transparent to anyone, any stranger even. Mm-hmm. Yeah. And the threat, I don't know any threat. Let me help you because we have to complete the activity. Threat are those things which are we fear of, that what if this would happen? What if I would be failing right there?
So what are your threats that you are seeking in the future? Okay, let me not face all those things. I have a threat of being in public media, like You that. have a threat of being social or antisocial? Social. Social. Yeah. Okay. Like what people will say about me. I'm very like insecure about my body even. Yeah. Okay. Face And what body. are the If somebody will look like 5 to 4 minutes, I will be like, why you assuming me like that? Why I'm looking bad or what? Like that. Very insecure about my thing. Yeah. Okay. And what is the opportunity? Opportunity, definitely the opportunity here, why I'm here is like I want to stand up to for every people, every woman out there who is not like अभी जो मैं आई हूँ यहाँ पर, why I'm here, like parents ने मुझे काफी convince करना पड़ा अपने parents को, like वो they were like कि यहाँ पर dark space ज्यादा है मॉडलिंग एंड ऑल में, तो मैंने उनको एक ट्रस्ट, एक भरोसा दिया कि नहीं, जो लड़की अपने खुद कर सकते कुछ तो उसे करना चाहिए. Great. अभी अगर मैंने पैटर्न स्टडी किया है, आपका चारों चीजों का पैटर्न ना ट्रस्ट फैक्टर पे रिवॉल्व कर रहा है. दैट इज अ गुड थिंग. आपका स्ट्रेंथ भी वही है कि आप मल्टीटास्किंग करती हैं. दैट मीन्स अगर आप में मल्टीटास्किंग है, दैट मीन्स आप अपने आप पे ट्रस्ट कर रही हैं कि ओके ठीक है, मुझे टाइम मैनेजमेंट करके ये वर्क टास्क इतनी देर में कंप्लीट करना है, मीनवाइल मुझे ये करना है. सो दैट इज द ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ. दैट इज योर स्ट्रेंथ. अभी वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि आपको खुद को मालूम है कि आप इतनी टैलेंटेड हैं, आप मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, लेकिन यू आर ए शाय पर्सन जो सामने उसको शो ऑफ नहीं कर पा रही. राइट? शो ऑफ कहना गलत होगा, मतलब शो का केसिंग नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका वीकनेस है. तो इसमें क्या करो, इसमें एक मैं आपको स्ट्रेटेजी बताती हूँ. अब अपना नजर थोड़ा वीक कर लो, आई साइट का नहीं. डू नॉट ऑब्जर्व एनीवन. आपकी तरफ कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है. आप जब FCM में आएंगे तो किसी को भी ऑब्जर्व करने की आपको जरूरत नहीं है कि उसने कितना अच्छी ज्वेलरी पहनी है या उसका गाउन कितना अच्छा है. जस्ट आपको एक चीज अपनी स्ट्रेटेजी में फिक्स करना है. आपको एक मिरर प्लेस करना है अपने रूम में एंड उसको ओवर देखना है, बहुत बारी देखना है. जब आप उसको देखेंगे तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहेंस होता जाएगा एंड ये आपकी आदत बन जाएगी. तो आप पब्लिक में जाके अपने आप को देखें, अपने फोन में सेल्फी में कैमरा में देखें, दूसरों को आप मत देखो. इससे आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो अपने आप पे ज्यादा आएगा. और थ्रेट आपने ये बताया कि आपका वो भी ट्रस्ट के रिगार्डिंग ही रिवॉल्व कर रहा था. राइट? ठीक है, कि वो भी आपका इसी से क्लैरिफाई होगा. जो आगे चल के होना है वो तो होके रहेगा. अगर आप FCM में आएंगे, मैं जज कर सकती हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि ओके ठीक है, मैंने इतने सबसे प्रोमिसेस तो कर दिए हैं, अगर ये पूरे ना हुए व्हाट इफ. राइट? सो आपको वो भी चीज नहीं सोचनी है. आप किसी भी, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप सिटी विनर तक भी रह जाते हैं, स्टेट विनर पे भी रह जाते हैं, तब भी वो ऑब्जर्व हो जाता है वहां पे. जरूरी नहीं होता है कि हमेशा विनर्स ही आगे जाएं. समटाइम्स इट हैपेंस. एंड आप तो मीडिया इंडस्ट्री से अगर इतना इत्तेफाक रखती हैं तो मालूम होगा. अभी बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी की. अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने बोला कि आपको सबको प्रूव करना है कि मीडिया इज डार्क साइड. आई एम द एग्जांपल. मैं पंजाब में मीडिया सेक्टर में हूँ. डार्क साइड बिल्कुल नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल. इट इज अ मैसेज टू एवरीवन, वेदर यू आर इन द मीडिया इंडस्ट्री और यू आर अ कॉमन पर्सन. ये आप पे डिपेंड करता है. आप जितना सामने वालों को हैंड देंगे, सामने वाला उतना ही पकड़ेगा. सो इट इज नॉट एट ऑल डार्क इंडस्ट्री. सो आपने ये आपका जो ट्रस्ट फैक्टर आप दे के आई हैं अपने घर में, वो बिल्कुल ठीक दे के आई हैं. FCA में आपको कोई नहीं बोलता है एक्सपोज करने के लिए, आपको कोई नहीं बोलता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा. मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली एंड एवरीवेयर. आप चाहे टेलीविजन में है, फिल्म इंडस्ट्री में है. और मैंने इसीलिए इतना जोर दिया इस बात पे क्योंकि 1 साल पहले सेम स्टेटमेंट मैंने दिया था, इसलिए. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आप अपने मिरर वर्क पे काम करो. डू नॉट एब्जॉर्ब एवरी. थैंक यू सो मच मैम. You're welcome. And I have taken the example of actually Shivani to elaborate you more ताकि आप SWOT analysis को समझ सके. आप सबको भी ऐसा ही करना है. आपको अपने स्ट्रेंथ लिखने हैं, वीकनेस लिखने हैं, थ्रेट लिखने हैं, अपॉर्चुनिटी लिखनी है और देखना है कि एक्चुअली कैसे इन लोगों का, इन चीजों का लिंक है
और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, राइट? थैंक यू शिवानी। Thank you so much, ma'am. Thank you. वेलकम। अभी बात आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया आपको मोटिवेशन देने के लिए आज सबसे बड़ा वेपन है। इट इज a recognized force in the world today. Everybody is tagging there. You are going to start your journey in the FCA and you would be tagging us, but please make sure do not tag us in the posts because it would not be visible. Always put up the story, then mention the trainer over there, mention FCA over there, because FCA would be sharing your stories only. The stories would be shared further and the people would be clicking over there, would reach to your account. So that is beneficial to your account. It is for your advertisement. You would be tagging FCA, you would be tagging a trainer or FCA would be sharing it further. Then it would increase your visibility. Your like counts would increase and people would be knowing, okay, this is the phenomena and this is the candidate of Miss India. Correct? Now, how do alter your weakness on the social media? Obviously nobody wants to show that weak factor on the social media. Anybody who wants to? If somebody is addicted to those sad stories or etc., stop them immediately. If you are heartbroken or something like that, if initiating, then only post the motivating post that you are going to actually alter it. Understood? Because it would give a very bad impression that you are I can understand everybody has a hard faces, everybody is improving day by day, but the point is that we have to improve, not on the stable point. So you would be tagging there and how to alter the weakness. Yes, coming to the point. If somebody is saying that, for example, if we are taking the example of one candidate XYZ, she is weak in the culinary arts, that means cooking. Okay, she has cooked for the first time. So you have to mention on the social media that with the example, with the help of the nutritionist or with the help of the any trainer, I have made this healthy food. Right? So these kind of opportunities that actually seeking for the growth, people would be knowing, okay, you earlier it was your weakness that you can't cook, but you are improving, you have cooked it the first time. Okay, that is the strength, altered strength. And the fourth one, with whom help, why are you doing, what is the concept? So it should not look like naughty one that you have the shared like this only. So mention there that I am the candidate of Miss India. That's why I am improving this. I am doing this, so that nobody can question the following thing, that why it is happening. Okay. Why is very important. Why are you doing? At what time you are doing? And the social media audience. Audience is very important. Feature your audience. If you have more number of following criteria from the abroad section, upload the stories at the night time. If you have more number of Indians, then upload the stories in the morning or afternoon. Afternoon is the best time to upload. So that actually relifts your ranking on the social media. Correct? These all things would help you motivate yourself from the social media also, as well as in your real life also. And in the fashion world, how to motivate yourself in the fashion world. Always observe that which features of yours are the best, naturally best creators of the god. For example, if somebody has beautiful eyes, enhance them. If somebody has not so good lips, then enhance with the makeup. Enhance with the makeup. In the upcoming sessions, you would be getting trainings from the numerous trainers who would be telling you about what is the healthy regime, what is the fitness, right fitness, what are the optimal measures of makeup, as well as the psychological, which I am explaining that how to overcome the hurdles. If you be having and still in the questions, trainers are available on the social media also. You can follow them, you can ask your questions if you're feeling shy over them, but put the questions that show your confidence. Okay, clear to everyone? So this is all from my side. If anybody has question, you can ask. Just type your name in the chat box or Jasmine, hi. Nandita this side. hi, Nivedita or Nandita?
Nandita, do we have to open our profile like it is in private mode? So obviously for tagging and to seeing the story, we have to open the profile, right, in social media. Yeah. Okay. It should be public, Nandita. It should be public, yeah. It should be public. One thing you can do, if you are, I can understand you might be having some, relatives or some toxic people in your social media you want to hide. Then there is the option on Instagram of the privacy. You can add those people in the close friend list or the another list, and if you want to show, there is an option that whom people you want to exit, whom people you want to show. It is available on the Facebook also, LinkedIn also, Instagram also. Just search about it so you can manage accordingly if you want to exclude 1-2 persons, but there is no need. If you are improving, it should be visible on your profile, yes, but it should be public so we can access over there, right? You're becoming a public figure, so it would start over here, right? Yeah. Thank you. Clear? Yes, Jasmine, sure. Anybody else? Yes, Roshni. Ma'am, by mistake I left the meeting, so I didn't get it what you tell about the social media. On social media, I told you that you have to put up the stories. In those stories, you have to mention that I have done this thing first time, okay, or something like this. Today I have made the dance video, okay, and tag FCA over there in the public mode, and do not tag in the post only, tag in the story so that it can be reshared. Okay, clear? And rest, if you have missed any important element, you can get this video on the YouTube later on also. You can rewind it and you can listen to all the aspects, and this is for everyone. You can find FCA on YouTube and you can listen to the previous sessions. That would be really helpful, and it would allow you to access your image, your virtual image also, that how you're looking over there, right? Clear, Roshni? Thank you. Anybody else? Himani. Yes, Himani. Ma'am, what you just told about the stories on the Instagram, how do we have to put the kind of content, how it should be? What are your hobbies? My hobbies are dancing and dancing. Pardon? Hobby? Dancing. Dancing. Okay. Then you can put up the dance video. You can tag us in the story and you can write over there that thank you, Exia, for choosing me as a part, and your dance video would be there, because everybody should be knowing that you are doing for the purpose that you are participating in some event. Okay. If you are thinking any trainer has helped you in that, for example, later on you would be getting your modeling trainers, dancing trainers, etc., right? Any and every trainer, so you can mention them also if you want to mention all the trainers, you can do that also. Thank you. Anybody else? Ma'am, I have a question. Yes, Vaishnavi. Ma'am, is it compulsory to put the stories on Instagram and Facebook? It is up to you. Actually, it would contribute your social media presence. For example, from the few days, a girl from Ikra is actually mentioning us in the stories. So now I know her name verbally. Now I know the name, activities. Next time, then when I would be watching her, it would come in my mind. Okay, she has done this. Okay, she's right. She's improving. These are the weakness, etc., And moreover, silent jury is there who is actually watching you from the social media. So it is actually, it would contribute, and it would contribute to your self-assessment also, right? Thank you. You're welcome, Vaishnavi.
Anybody else? Ma'am, is I'm audible? Yes. Can you just tell me your name? Where are you? On the speaker side, I'm seeing Vaishnavi. I'm Simardeep Kaur. Yes, Simmer. Now can I see you? Yes. Okay, ma'am. Ma'am, actually, I day before yesterday also I have joined. I am in Mrs. India. So I think by mistaken I have joined today. So I'm not sure about the training, whether is it regular or alternative days, because previously I was informed that it will be alternative days. So can you please confirm so that I'll get back to your project coordinator. But let me tell you from the my side. Sorry to cut you, Jasmine. But the thing, Simardeep, आपके पास जो भी आज लिंक आई, आपने कल ट्रेनिंग सेशन लिया था, ट्रेनिंग सेशन आपके 2 होंगे, आपका पहला इंट्रोडक्टरी सेशन हो चुका होगा, राइट? यस मैम, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा वो 1 वीक या 2 वीक बाद, आपको उससे 2 दिन प्रायर टू जो भी आपकी डेट है उससे प्रायर टू 2 दिन आपको आपकी लिंक मिल जाएगी, तब आपको ज्वाइन करना है। आपने ये सेशन आप पहले ले चुके हो ना, राइट? तो आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपके ट्रेनिंग सेशन के बाद जो 3 टैलेंट राउंड होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी राउंड में सिखाया होगा आप उसकी प्रोसेस कीजिए। ओके, सो एनीवन हैज एनी डाउट, they can put their name on chat or can raise their hand also. And I request everyone to put their mic on mute. Yeah. So सबको सब क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो जो आपका ट्रेनिंग पार्ट था, जो भी आपको कुछ सीखना था, नोट करना था, वो अभी पास हो चुका है। अभी अपन बात करते हैं आपके बेनिफिट्स की, जो थोड़ा लाइक सारा आप ट्रेनिंग कर लिया, ये कर लिया, लेकिन हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? आई विल रिकॉल यू द सम बेनिफिट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम आवर साइट्स, फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, राइट? The first thing you are getting from our platform is lifetime access membership. Like you are officially becoming participation to Forever Star India, and आप अब ऑफिशियली सेलिब्रिटी बन रहे हैं। ओके, सो आप उसकी तरह बिहेव करना, जो भी आपका, जैसे जास्मीन ने आपको बताया सोशल मीडिया प्रेजेंस के ऊपर, राइट, उस पर आपको वर्क करना है। एंड द थिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट लाइफ टाइम एक्सेस, मैं उसको थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ कि उसका मतलब क्या है। जैसे कि आपने इस साल प्लेटफॉर्म पे अपना ऑडिशन आप दे चुके हो, तो आप नेक्स्ट ईयर या बाकी के कभी भी अपनी लाइफ टाइम में वापस से आप अप्लाई कर सकते हो। ना ही आपको ऑडिशन चार्ज वापस देना होगा, ना ऑडिशन, आप डायरेक्ट हमारे पार्टिसिपेशन में जाओगे। ओके, एंड द सेकंड थिंग, लाइक सब वेट कर रहे हैं अपना नाम गूगल पर आने के, कि हमारा नाम गूगल पर कब आएगा, कब हमारा नाम हम सर्च करें और गूगल पर हाईलाइट हो, राइट? एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट। लेकिन उससे पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका नाम गूगल पर आएगा। उससे पहले जो आपकी फॉरएवर स्टार इंडिया एप्लीकेशन है, उस पर जो आप सभी ने लॉगिन कर रखा होगा, फर्स्ट गिव मी अ थम्स अप कि सबने उधर लॉगिन कर रखा है, सबकी प्रोफाइल उधर लाइव है, सबने उधर लॉगिन कर रखा है। ओके, तो जो वो आपकी प्रोफाइल है, आपको सिर्फ लॉगिन ही नहीं करना है, उससे रेगुलर बेसिस पर अपडेट करना है। मेक श्योर करें जो भी आपकी, आप उसे ओपन करके आप प्रोफाइल देखोगे, वहां आप देखोगे कि आपकी 40% या 50%, 60% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट दिख रहा है। आप गूगल पर तभी प्रमोट हो सकते हो तब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी। मेक श्योर करें, और वो 100% कैसे कंप्लीट होगी? पोस्ट 4-5 पिक्चर्स टू देयर, आप अपना कंटेंट पोस्ट करो, जो भी, जिससे भी किसी की हॉबी लाइक डांस है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, या व्हाटएवर, आप किसी को मेकअप करना पसंद है, किसी का स्किन केयर रूटीन हो गया, उसको वो बताना है। आप कुछ भी अपने से रिलेटेड या अपने से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट करके उसे 100% को आपको करना है, तभी वो जाके गूगल पर प्रमोट होगी। ओके, इसके बाद मैं आपकी बात करती हूँ प्रोसेस की। सबसे पहले आप, एज यू ऑल नो, सबसे पहले आपकी क्राउनिंग होगी सिटी लेवल पर, एंड दैट विल बी हैपन इन मिड ऑफ अगस्त। ठीक है, सिटी लेवल की क्राउनिंग के बाद, मिड ऑफ अगस्त के बाद, यू विल डायरेक्टली गेट प्रमोटेड टू द स्टेट लेवल, एंड द स्टेट लेवल क्राउनिंग विल हैपन टू मिड ऑफ सितंबर। ओके, आफ्टर दैट स्टेट लेवल के बाद यू विल गेट प्रमोटेड टू द नेशनल लेवल, और उसकी क्राउनिंग होती है दिसंबर मिड वीक। एंड आफ्टर दैट I will explain you, as Jasmine already explained about the social media presence, but here
आई हैव सीन नंदिता हैवन डाउट कि अगर हमारा प्राइवेट अकाउंट हुआ तो डू वन थिंग, जो आपका प्राइवेट अकाउंट है, जो भी आपकी पर्सनल चीजें हैं आप उसे रखिए, आप एक दूसरा अकाउंट बना सकते हो जिससे आप एक जो आपकी ब्यूटी पेजेंट की जर्नी है आप उससे रिलेटेड अकाउंट बना सकते हो। उधर आप ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड या आपकी जो हॉबीज है उससे रिलेटेड आप उस पर पोस्ट करो, उसको आप उसमें फॉरएवर स्टार इंडिया या जो भी आपका ट्रेनर है, जो भी आपका जिससे आप रिलेट करते हो उसको टैग करो ताकि हम उसको रिपोस्ट कर सकें। अगर आपके सबके किसी किसी की क्वेरी आती है कि मैम हम आपको टैग कर रहे हैं लेकिन आप रिपोस्ट नहीं कर रहे हो, हम उन्हें रिपोस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपके सबके अकाउंट्स प्राइवेट है तो। हम उसे तभी रिपोस्ट कर सकते हैं जब आपके सबके अकाउंट पब्लिक होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे नंदिका का डाउट था और भी किसी का डाउट था कि हमारी जो प्राइवेट थिंग्स है उधर हमारी पर्सनल चीज है, नो प्रॉब्लम, डू अनदर अकाउंट, आप दूसरा अकाउंट बनाइए, उधर पोस्ट कीजिए एंड मेक श्योर आप डेली बेसिस पे पोस्ट करें। जैसे मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जब हम चीजें, जो भी हम कोई कंटेंट देखते हैं, हम किसी को फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर बहुत ही इरेलेवेंट कंटेंट आता है, हमारी ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड नहीं, या जो हमें चीजें नहीं लाइक कुछ भी, आप जैसे आप कोई स्पोर्ट्स में नहीं है फिर भी स्पोर्ट्स का कंटेंट आ रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी और चीज से रिलेट नहीं करते हो पर उसका कंटेंट भी आ रहा है, राइट। लेकिन आप फॉरएवर स्टार इंडिया के एप्लीकेशन पे अपना जो ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड है कंटेंट वहां पोस्ट कर सकते हो। वहां जैसे कि सबने एक्सप्लेन किया आपको ट्रेनर्स के, वहां साइलेंट हमारी जूरी है वो आपको नोटिस करती है, तो वो कंटेंट आपका वहां से भी देखा जा रहा है। ओके, आई होप आई मेक एवरीथिंग पॉइंट क्लियर टू यू। सबसे पहले जाके आप सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, जो भी आप स्टोरी डालते हैं, रील डालते हैं, फॉरएवर स्टार इंडिया को टैग करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप सभी जो हमारे पेजेस हैं फॉरएवर स्टार इंडिया, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आप सभी उसे फॉलो कर रहे हैं, गिव मी अ थम्स अप ऑन दैट। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आई विल मेंशन द इंस्टाग्राम आईडी टू द चैट बॉक्स, आप वहां जाके भी वहां से ले सकते हैं और उन्हें फॉलो कर सकते हैं ताकि आप उसे टैग कर सकें। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सब लास्ट तक बने रहे, आपने ट्रेनिंग सेशन अच्छे से लिया एंड आई होप आप सब स्माइल करें एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में आप और अटेंटिव हो। जो भी आज आपने सीखा है उसको आप नेक्स्ट टाइम से उस पर लाइक पूरा आज का प्रोसेस करके, जो आपकी वर्चुअल प्रेजेंस पे बात हुई है, आप नेक्स्ट टाइम से उस पर अच्छे से काम करके वापस आए, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेक्शन आपका और अच्छा हो। ओके, सो गाइस, थैंक यू, that was it for the day।